Friend, Assalamu alaikum. Good morning, everybody. Welcome back to the next lecture of English language. So today we are going to solve workshop of the poem Life. Notes you might have written in the previous lecture as I have already given. Today we are going to solve few examples of figure of speeches and we will see appreciation of the poem. A very beautiful poem, Life, written by Charlotte Bronte. See the question. Pick out from the extract 2 lines each that reflect an optimistic. Optimistic means positive attitude and pessimistic means negative attitude. As we have seen throughout the poem, there are positive and negative both the ideas. So now you will segregate them as optimism and pessimism. उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं जो कि हमने देखी है. Each line contains both the things. Not each line, each stanza is having positive and negative both the sides of the life. So you have to segregate them. Two examples I have already done for you. Make sure that you identify at least more 2 examples of each. ठीक है, ये आपका खुद का पर्सनल होगा कि आपको समझा है या नहीं. Because student, it is very easy to just copy the notes and keep in the books. But you know what? When you will try to solve these kind of examples on your own, then only this will be your proper studies. Okay? इसका मतलब होगा कि आपको समझ रहा है, क्योंकि रेडीमेड लिखना बहुत आसान है. खुद से ढूंढोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. See, first one. Foretells a pleasant day, but these are transient all. Foretells a pleasant day. You know what? It's a prediction that day will be pleasant. But these are transient all. What? The clouds of gloom. है ना, यहाँ पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया जा रहा है कि ये जो दुख के बादल है ये कुछ वक्त के लिए है, ये तो चले जाएंगे. ओके, सो दीज आर ऑल पॉजिटिव थिंग्स विच इज डिस्कस. देर आर मेनी अदर, फाइंड आउट एंड राइट. नेक्स्ट वन, पेसिमिज्म. ऑफन अ लिटिल मॉर्निंग रेन. समटाइम्स देर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम. कभी कभी दुख के बादल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया है. समटाइम्स देर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम. ओके, life is a dark dream. These are all come in the pessimism. Okay, next. Explain the metaphor in the following lines. Explain the metaphor. Now children, tell me, what is metaphor? Metaphor is a figure of speech in which one thing directly get compared to the another. एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर किया जाता है without using a word as and like. ओके, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से डायरेक्ट कंपेयर करना या उस चीज़ को वो चीज़ कहना इज मेटाफर. ओके, ऑफन अ लिटिल मॉर्निंग रेन foretells a pleasant day. If we have difficulties at some stage, there will be joyous times following it. This is the meaning. So what is compared over here? Difficulties are compared implicitly to rain and joyous time to a pleasant day. Okay? जॉयस टाइम को प्लेजेंट डे से कंपेयर किया गया है और डिफ़िकल्टीज को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है? रेन. फाइन. इनडायरेक्टली इट इज कंपेयर्ड. Sorry, directly it is compared. That's why it is called metaphor. See, by the time you understand this is a direct comparison, that is metaphor. Inshallah, in the figure of speech session, I'll give you in details. Fine. Next. The shower will make the roses bloom. Now what is compared here? The problems we face will make for better times ahead. Problems are compared to the showers of rain and better times are compared to roses bloom. Okay, showers को किससे compare किया गया है? Problems से. Make the roses bloom, that is better times. Fine. Next. Life sunny hours flit by. Sunny hours किसको बोला जा रहा है यहाँ पे? The good times. So here also the sunny hours are compared to the good times of the life, happy times of the life. Okay, so this is called metaphor. Next, pick out 4 examples of personification. Write what is personified in each. Now children, first of all, tell me, what is personification? Let me tell you, this is the another figure of speech. In this figure of speech, the human quality is given to non-living things, or sometimes it is given to some idea, or sometimes it is given to the animals. ठीक है?
और प्लांट्स, इंसानों की जो क्वालिटीज़ है वो दूसरी चीज़ों को दी जाती है. सी द एग्जाम्पल, death steps in. Death is personified. Why death is personified? Because the human quality of stepping in is given to death. मौत आ रही है, ये आना और जाना ये इंसानों की क्वालिटी है जो कि दी गई है डेथ को. Apart from this, I'll give you one simple example. We say the flowers were dancing in the rain, right? The flowers are dancing in the rain. The dancing is the human quality, but I have given it to flowers. So you can say that yes, this is also personification. Sorrow seems to win. Sorrow is personified because winning is also human quality. Yet hope again, elastic springs, unconquered, though she fell. Hope is personified. See, elastic spring, that means regain, falling, these are all qualities of human being which is given to hope. होप गिरता है, फिर उठता है, फिर संभलता है. तो ये सारी क्वालिटीज़ जो इंसानों वाली है, जो किसको दी गई है? होप को दी गई है. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो personification. होप इज personified. नेक्स्ट इज ऑल्सो द सेम. कैन courage quell despair? Courageous, personified. Fine, I hope you all have understood. Let's see what is next. Pick out 3 examples of interrogation. From the extract, explain in your own words the point that each one make. Say children, what do you mean by interrogation? See, the types of sentences also you might have done in the lower classes. Interrogation matlab question. If the sentence is getting over at question mark, that is interrogation, यानी कि सवाल, question. Very very simple. ये आसानी से मिल जाता है and it is very easy to identify, but yet you have to explain it too. If the shower will make the roses bloom, oh why laminates fall? See children, during the explanation I explained it. अगर आपको याद होगा तो मैंने ये explain किया था. If a little rain helps the roses to bloom, we should not feel unhappy. अगर हमें तो पता ही है कि बारिश आती है, लेकिन उससे हम कभी कभी डर भी जाते हैं, जबकि हमें ये पता है कि दैट इज़ फॉर आवर बेनिफिट. तो वी शुड ऑलवेज रेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस courageously. Next, see children, appreciation of the poem. This is also very very important question in the question paper and it's compulsory question which comes for 5 marks. See children, here you don't get any choice. मतलब पोएम आपको एक ही दी जाती है और उसी का आपको अप्रिसिएशन लिखना होता है. यू डोंट गेट चॉइस देयर. कंपल्सरी क्वेश्चन. ओके, एंड दे गिव यू द पॉइंट्स ऑल्सो विच यू शुड डिस्कस while writing the appreciation of the poem. Now today I'll show you which points should be discussed and how the appreciation of the poem should be written in the paper. The appreciation of the poem should be written in the paragraph form. ठीक है? You know what? In the 8th standard, children, you might have used to write in the points. पहले points में लिखना ऐसा बोला जाता था कि points में लिखना है आपको, लेकिन नहीं, the pattern is changed and now you will be having the different pattern, that is paragraph form. तो आपको appreciation of the poem paragraph form में ही लिखना है. आपको side heading डाल के पॉइंट्स नहीं लिखने हैं. ओके, इफ़ यू विल डू सो यू विल नॉट गेट द मार्क्स. प्लीज़ बी केयरफुल. because this is my personal experience. After explaining the paragraph form, after telling also many times, the student do the same mistake. ओके, बोर्ड एग्जाम में भी यही गलती करते हैं आप लोग. आपको बोला जाता है कि आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, लेकिन इसके बावजूद भी आप क्या करते हो, पॉइंट्स में लिखते हो. तो अभी ये एकदम लॉक कर दो ये पॉइंट दैट यू हैव टू राइट इन दी पैराग्राफ एंड ओनली पैराग्राफ फॉर्म. फाइन, तो अभी भूलेंगे नहीं आप. तो देखो कैसे लिखना है और कौन से पॉइंट डिस्कस करने हैं. नेक्स्ट, पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड इन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. विच पॉइंट्स शुड बी डिस्कस? टाइटल, you have to write in the paragraph, but these points, ये सारे points उसमें आ जाने चाहिए. Title of the poem, what is today's title, that is Life, written by Charlotte Bronte. What is central idea, which rhyme schemes the poetess has used throughout the poem. Okay,
which are the major figure of speeches you have seen throughout the poem, and if you want you can give the examples, you can explain them. Okay, अभी हमने जैसे कि देखे ना metaphor, personification, these are the major figure of speeches which are used by the poetess throughout the poem. Okay, what is the speciality? क्या है speciality? It is the positive attitude of the life is shown in the poem with the examples of negative attitude also. लेकिन उसका मैसेज क्या है? We should have courage and we should have a positive attitude in our life. What you like or dislike in the poem. अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो no problem, you are free to write that you did not like this thing in the poem. समझ में आ रहा है आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, ये आपको लिखना है. Okay, so here it is already written. I'll just go through it. The poem Life by Charlotte Bronte is motivating and optimistic poem. Optimistic है, positive poem है, इसमें पूरी positive बातें बताई गई हैं. The poetess says that the bad things in the life is for temporary period, as we have seen. The clouds of gloom are transient. You know what? By giving several examples, the poetess showed us the positive sides of the life. राइम स्कीम कौन सी यूज हुई है? राइम स्कीम विच इज़ यूज इन द पोएम इज ABCB एंड देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन ऑल द स्टैंजास दैट द सेम राइम स्कीम इज फॉलोड बाय द अदर स्टैंजास ऑल्सो. ठीक है, देन यू विल राइट विच आर योर फेवरेट लाइन्स इन द पोएम. आपको कौन सी लाइन बहुत ज़्यादा पसंद है और क्यों पसंद है, दैट यू विल राइट. ओके चिल्ड्रेन, माई फेवरेट लाइन्स, येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स, फिर से होप आता है, एक नाउमीदी के बाद फिर उम्मीद जागती है. एज वी ऑल आर गोइंग थ्रू द बैड टाइम्स नाउ डेज, है ना, कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है. वी ऑल आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम. फ्रॉम मंडे अगेन देर विल बी लॉकडाउन, है ना. सो दिस लॉकडाउन इज फॉर ट्रांजिएंट पीरियड चिल्ड्रन, येस और नो? क्या पूरा साल लॉकडाउन होगा? This is for transient period for 10 days, then again there will be a life, है ना. So this poem is very very suitable for the circumstances through which we all are going through. So I hope you all have understood the poem and you all have understood the pattern how you have to write appreciation of the poem. और अगर आपका पूरा राइट आता है तो no problem, you will get 5 out of 5. Okay children, so this appreciation of the poem you will write in the वर्कबुक इफ़ यू हैव. अगर नहीं है वर्कबुक तो आप नोटबुक में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ राइट डाउन नोट्स केयरफुली विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स इन दी वर्कबुक और इन दी नोटबुक. थैंक यू सो मच. बाय.